Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video, we will be discussing important current affairs for 17th of June. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. In this video, students, we will be talking about Garuda's Agri-Drone indigenization facility that was held in Chennai, Tamil Nadu. Then DGT and Shell India has launched Green Skills and EV training program in multiple areas. We will be discussing that. Then Madhya Pradesh and France, they have signed an MOU to enhance the culture and tourism cooperation between these two areas. And we will be talking about Conquest, that is the 22nd edition of this exercise. All these news and many more will be discussed here, students, so stay tuned with us till the end. If you are new here, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Also students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. These videos are very important for learning, so do watch them and make notes. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Before moving on students, I want to see all the students hit the subscribe button right away, because I'm seeing that many of your students have not subscribed yet. So do subscribe as soon as possible, right now only I want you all to subscribe, then we will be proceeding to this content, right? I hope you must have subscribed. Now let's move on. The first is national affairs. Union Minister of State Kamlesh Paswan inaugurated the Garuda's Agri-Drone indigenization facility in Chennai, Tamil Nadu. So the question itself first, that where was the Garuda's Agri-Drone indigenization facility inaugurated in Chennai, Tamil Nadu, right? First thing, take a note of this, correct? And in Chennai, Tamil Nadu too, it is at Thalambur. At Thalambur, right? Also here during this event, live Agri-Drone was demonstrated, right? How this will be beneficial is these drones will be enhancing the agriculture, right? They will be helpful for spraying, for monitoring purposes, right? And take a note, this new state-of-the-art Agri-Drone indigenization facility, it span across almost 3,500 square feet of area, and it is now India's first of its kind hub for designing and manufacturing of unmanned aerial systems, that are your drones, correct? Take a note of this. Then apart from this students, one more thing you need to remember, right? That is Kamlesh Paswan has also inaugurated 300 Center of Excellence and has flagged off the Directorate General of Civil Aviation approved Train the Trainer program, that is TTT program of Garuda Aerospace, right? So do remember these two things also, that is 3000 Center of Excellence and TTT program, Triple T program, that is Train the Trainer program, that this program is of Garuda Aerospace. Moving on, next, here you can see this new state-of-the-art facility that we was talking about. For that, all the content has been provided here. Next is DGT and Shell India. They have launched Green Skill and EV training program, right? In this initiative, we are focusing on electric vehicles, that how we can enhance the usage of electric vehicles in India. What are the requirements of infrastructure, first thing. Then after that, the electric vehicles will be made. Then for the repair of that, training has to be imparted into various individuals for the same, right? Also, we will be focusing on green skills and EV training programs, and this will be done specifically in Delhi NCR region, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu and Karnataka. One more thing, remember students, recently in Karnataka, Rapido, right, and all the electric two-wheelers, electric vehicle ride hailing applications, they have been posted, right? That means they have been banned for a foreseeable future, and let's see when they will be resuming, but as of now they won't be allowed to operate in the cities. Ola, Uber, Rapido and so on, only two-wheelers, correct? So coming back, this program aims to equip the students and the facilities that are looking to have expertise in the green skills and electric vehicle or electric mobility, right? In this program you will be seeing this will be a training module, and in this more than 240 hours of advanced EV technician course will be there. Then 90 hours of job oriented electric vehicle skills will be provided, and 50 hours of green skilling programs will also be provided here.
Moving on, next is Madhya Pradesh and France. They have recently signed an MOU that will enhance the culture and tourism cooperation. So in simple terms, we can say in order to enhance the tourism in Madhya Pradesh and France, this MOU has been signed. This is valid for the next 3 years, and this MOU will outline various initiatives that will enrich the Madhya Pradesh cultural ecosystem, and also joint cultural programs will be held between Madhya Pradesh and France, where students, artisans, cultural institutions, right, all they can have the exchange programs that will enhance the cultural exchange between the two areas. Next, our country, or specifically Indian Army, they took part in the 22nd edition of the Conquest exercise. This was held as this exercise was held in Ulaanbaatar in Mongolia, right? So in Mongolia this exercise was held. That was the 22nd edition of this exercise. From 14 to 28th of June this exercise is being conducted. Earlier the 21st edition of this exercise was also conducted in Mongolia itself in 2024 in August month. And from Indian Army, 40 personals took part in this exercise from Kumon Regiment. From Kumon Regiment. Next is World Bank report has been recently released, and it states carbon pricing covers around 28% of the global house gas emissions, accounting for almost 2/3 of the global GDP. What does this mean, students? We are talking about the carbon pricing covers, right? What are these carbon pricing covers and everything, right? So carbon taxes are there and everything. So this report highlighted that there have been a major change in the last 10 years. That is, the average prices have approximately doubled, and it covers emissions have increased from 12% to 28%, and the revenue has been tripled. Correct. So this report, that is the state and trends of carbon pricing, right, released by World Bank, stated that the countries are increasingly adopting the carbon prices. That means if they are creating more carbon or releasing more carbon into the atmosphere, they are taxed heavily, and the pricing is according to them, right? If they are green projects, if they are using green energy, hence they will be much favored. Correct. So countries, they are increasingly adopting the carbon pricing, which now covers 28% of the global greenhouse gas emissions, accounting for almost 2/3 of the global GDP. Correct. Also, the report further revealed that the number of operational carbon pricing instruments has increased significantly from 5 to 80 in 2025. This report released by World Bank. Also, this report further revealed that the number of carbon pricing instruments we just saw has increased from 5 to 80, with India, Brazil and Turkey actively developing them, right? These carbon pricing instruments, if some of the students don't know, these cover the external cost of the greenhouse gas emissions, such as your damage to the crops, healthcare expenses. As I mentioned, when there will be more carbon released, it will be creating more pollution, hence more amount of taxes or more amount of penalties will be imposed on them, right? And more external cost will be provided to them, such that will increase your emissions, damaged crops, their insurances, health expenses and other things, right? Next is India's Union Cabinet has only 9.7% women ministers as per the data released by United Nations Women, right? And here also this United Nations Women, correct, they have released this fact sheet, Women in Politics 2025, and it highlighted that India's Union Cabinet, it has 9.7 women ministers. That represents the second lowest portion since 2011. Correct? Take a note of this. One more thing, this Women in Politics 2025 map, it has been developed by Geneva, Switzerland based Inter-Parliamentary Union and UN Women. Next, one more data here, students, that there are 9 countries globally that holds 50% or more of women in the position of cabinet ministers. Now let's move on. AV list, right, that is avian taxonomy list. This is the first ever global checklist of the bird species and taxonomy that was published, providing a standard reference for ornithologists and conservationists around the world. This initiative is the result of 4 years of collaborative efforts by working groups on avian checklist, comprising leading global experts in bird taxonomy and submetics. Next, banking and finance. RBI has allowed STRIPS in state government securities. What is this STRIPS TRIPS? That is separate trading of registered interest and principal of securities, right? So RBI has allowed STRIPS in state government securities. This will be in addition to the existing STRIPS and reconstitution allowed since April 1, 2010.
These strips, basically these are the securities that represent either the principal or each interest payment of a bond that allow them to be traded separately in the market. Each component, it is a zero coupon bond, meaning it is sold at a discount and pays no interest until maturity. Also, according to RBI, all the fixed coupon bonds issued by the state governments or union territories with residual maturity of maximum 14 years and minimum outstanding of 1000 crore rupees are eligible for stripes. If we talk about one more thing here, students, these securities, they are required to be eligible for investing for meeting bank's statutory liquidity ratio, that is SLR requirements, and are transferable. What is SLR? Basically, this SLR, it is a regulatory requirement mandated by RBI to ensure solvency of banks and control inflation and liquidity in the economy. Moving on, next is NSO, National Statistical Office. They have released a report that stated India's inflation has dropped to a 6-year low of 2.82% in May 2025. This NSO comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation, and they have released the data here. India's retail inflation dropped to a 75-year low of 2.82% in the month of May. In April, it was 3.16%, and now in May, it is in 2.82%. We are at the lowest level in inflation in the last 6 years, right? Here, if we see the food inflation, right, it is 0.99% provisional, right? In Kerala, remember, it is the highest inflation that we are seeing. Kerala has topped in all states and union territories with the highest inflation, that is of 6.46%. Then there is rural inflation of almost 2.59%. Then urban inflation of 3.07%, core inflation 4.28%, right, and many other things. If we talked about Kerala with the highest inflation 6.46%, Telangana is the state with the least inflation of 0.55% in the month of May. Next is appointments and resignations, students. Gombozav Jandasantra. Next is appointments and resignations, students. Recently, Gombozav has been appointed as the 34th Prime Minister of Mongolia. Next is science and technology. ASI, Archaeological Survey of India, in space and ISRO, they have successfully conducted the model rocket launch trials in Kushinagar in Uttar Pradesh, right? This was with a payload, right? And this rocket, this launch, basically it marks a departure from earlier ISRO experiments in Ahmedabad, Gujarat, where payloads were deployed via drones. In this, it carried drone in it, right? Here, this model rocket launcher is developed by Ghaziabad UP based Thrust Tech India Private Limited. This rocket, it is 15 kg and it ascends to approximately 1.1 kilometer, right? Next is South Africa has clinched the ICC World Test Championship for 23-25 title. So who won the ICC World Chess Championship? It was won by South Africa, right? Take a note of this. The final event was held in London, England, and this was the third edition of the ICC World Test Championship that was held from 23rd June to June 2025. And here you can see Eden Markram received the Man of the Match award for his match-winning century, and a total prize of $5.76 million was announced for the winners. Next, George Russell has won the F1 Canadian Grand Prix. As you can see him in the picture, he is George Russell. He is from Germany. He drives for Mercedes, and he became the and he secured the first position in the F1 Grand Prix, right? That is Canadian Grand Prix. This was the 63rd edition of the Canadian Grand Prix that was held recently, right? Then apart from this, George Russell first, Max Verstappen second, and third is Andrea Kimi and Jolie. Moving on, then ISSF World Cup Munich was held, and our country India secured the third place with a total of 4 medals, right? This is your rifle, pistol and shotgun World Cup that was held in Munich in Germany. It was from 8th to 15th of June that this was held, right? It featured more than 334 athletes representing almost 49 countries, and our country India, we secured the third position in the medal tally with a total of 4 medals, that is 2 gold and 2 bronze. Who secured the first position? China secured the first position and Norway secured the second position. Next is Obituary. Apple's pioneering software designer Bill Atkinson has recently passed away. As you can see him in the picture. So Bill Atkinson has recently passed away.
He was the renowned visionary software designer behind the graphical user interface of Apple computer, and he recently passed away. Then next is important days. World Blood Donor Day observed on 14th of June. This is to raise awareness about the contributions of voluntarily unpaid blood donors and raise the awareness about the critical needs for safe food and blood products. Also this year it was the 21st edition of the World Blood Donor Day that was observed by World Health Organization. Then there is a theme, give blood, give hope. Together we save lives. This is the theme here. And it is Italy that hosted the 2025 global events through the Rome, Italy based National Blood Center. Moving on, World Elder Abuse Awareness Day observed on 15th of June. This day is to raise awareness about the abuse and neglect and the mistreatment that are faced by the older generation. This theme here is addressing abuse of older adults in long-term care facilities through data and action. First time this day was observed in 2012. The next is Global Wind Day observed on 15th of June. This day is to raise awareness about the importance of wind, and nowadays we can also generate electricity through wind. Right? The theme here is Day of Community Action. Right? Take a note of this. Then Karnataka state, remember, it has topped the wind power addition in FY25, and India targets to add 100 gigawatt of wind capacity by 2030. Karnataka first position with 1331 megawatt, Tamil Nadu second, and Gujarat was on the third position in terms of wind energy. Remember students, Gujarat is also performing very well in terms of solar energy. Your homework is to tell me in terms of solar energy, what is the rank of Gujarat and which state secures the first position in terms of solar energy. Then next is Asian Dengue Day observed on 15th of June. This day is to raise awareness about the dengue that is caused by a mosquito bite, right? And there is a theme here, towards zero dengue deaths. Science, strategy and solidarity is the theme here. This day emphasizes the preventive measures, scientific advancement and community participation to combat this deadly disease. Next is state news students. Andhra Pradesh has launched Talaki Vandanam, right? This is a scheme that has been launched for school going students. If we talk about this scheme, in this scheme, basically, what this here will be happen is a financial assistance of 15,000 rupees per school going child will be provided to the mother's bank account directly. Correct? It will be a direct benefit transfer of 15,000 rupees here. Also students, here the students from class 1 to 12th will be covered, right? Both in private and government aided schools as well as in unaided schools. So that's all for the day students. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. Identify the institution where Dr. Jitendra Singh, our Union Minister of State for Ministry of Science and Technology, inaugurated Sagar Bhavan and Polar Bhavan in Goa in May 2025. Right? Identify the institution where was this launched. So National Center for Polar and Ocean Research, this was launched. That is Sagar Bhavan and Polar Bhavan. Right? This will enhance research and development in polar regions, right? And oceans. Next, what is the minimum amount of financial loss for the Ministry of Home Affairs Electronic Zero First Information Report, that is E0 FIR initiative automatically registers FIRs for cybercrime complaints? I repeat, minimum amount of financial loss for which, right? That how much minimum loss should be there for which your E0 FIR will be automatically registered for cybercrime complaints. Tell me, it is a minimum of 10 lakh rupees. Correct? Next, mention the country that was officially admitted as the new member of New Development Bank as announced by the New Development Bank President Dilma Rousseff on 22nd of May. It is Algeria. Right? It is the country that was officially admitted as the new member of the New Development Bank. That was earlier known as the BRICS Development Bank. Next, USA President Donald Trump unveiled a defense system for $175 billion by the name Golden Dome. This is the new missile defense system that will help USA in countering the foreign missile attacks. And Trump has appointed whom of the US Space Force as the lead program manager. So here General Michael Gatlin was appointed as the program manager for the Golden Dome. As Israel is having their Iron Dome,
right? USA will have their golden dawn that will protect United States of America for income from the incoming UAVs, drones, or missiles, right? Next, which country launched the world's first AI-powered medical clinic on 24th of May in partnership with Shanghai-based Sinyai AI and Almosa Health Group? So, which country launched the world's first AI-powered medical clinic? It was launched by Saudi Arabia. It was launched by Saudi Arabia. Next is the President of India invoked dash of the Constitution to seek the Supreme Court's opinion on the 8th of April judgment regarding timelines for granting assent to the state legislature bill. Right. So the President of India invoked the Article 143(1) of the Constitution of India, seeking the Supreme Court's opinion on the 8th April judgment regarding timelines. Next, the second Blue Talks hosted by the New Delhi in May by the Ministry of Earth Science was organized in collaboration with the embassies of France and Costa Rica. Next, which ministry oversees the Spice Board of India that launched the sustainability in the spice sector through the Spiced scheme in May? That is your spice sector through progressive, innovative and collaboration interventions for export development. This is your spice scheme. This will promote the trading, or it will promote the trade in spices, specifically spices. So which ministry is overseeing the spice board here? It is the Ministry of Commerce and Industry. Next, according to RBI latest data released in May, the outward remittance under the liberalized remittance scheme declined by 6.85% year on year to how much? It declined to $29.56 billion in FY25 compared to $31.74 billion in FY24. Right, there are certain factors, that is global uncertainty, stagnant domestic income growth and high base effect. Next, RBI notified the formation of a 6-member Payments Regulatory Board under the Payments Regulatory Board Regulation of 25 to regulate and supervise the payment systems in India, replacing the existing board for regulations and supervisions of payments and settlement systems. Who will be the chairperson of this 6-member board? So RBI governor will be the chairperson of this 6-member board. Next, space startup Agnikul Cosmos Private Limited, they have successfully fired the India's first electric motor driven dash, which is set to power its upcoming Agniban launch vehicle. So this will be powering India's first electric motor driven semi cryogenic engine, right? And this is the first time an engine of this kind has been developed and tested in India. Next, which state government celebrated the 5th edition of the Shirui Lily Festival to commemorate 75th anniversary of the discovery of the rare Shirui lily flower, and it is to promote sustainable tourism, ecotourism and environmental awareness, right? The main reason here is this will promote tourism and we will be able to make products and export the products that are related to Shirui lily, right? So which state government recently celebrated here 5th edition of Shirui Lily Festival? It was observed by Manipur. Next, mention the organization that extended the implementation deadline of the mandatory quality control order for certain electrical appliances to 19th of March 2026. So mention that organization. Which is that organization? It is the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Next, mention the public sector undertaking under the Ministry of Railways that was approved for the merger with the Indian Railways by the government of Maharashtra in May. So mention the public sector undertaking here. Which is that public sector undertaking we are talking about here? It is Konkan Railways Corporation Limited, and they have merged with Indian Railways, but they will be keeping their name Konkan Railways. Next, how much amount is approved by the Central Board of Directors of RBI in their 650th meeting that was held in May to be transferred as the surplus to the Government of India for FY25? So how much amount was approved for the transfer? It was 2.69 trillion rupees. This was a surplus we saw.
Next, mention the name of the person who was sworn in as the 48th President of the Republic of Ecuador in May for a 4-year presidential term, that is 2025 to 2029. So Daniel Noboa, right, was named, he was the person who is sworn as the 48th President of Ecuador. Next, Khelo India Beach Games. This was the first edition of the Khelo India Beach Games and India's first national level beach sports event held in May in Diu Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Which state topped the medal tally here and with how many medals? So Manipur secured the top position here with a total of 14 medals, out of which 5 gold, 6 silver and 3 bronze. Maharashtra on second position and Nagaland on third position. Next, who among the following won the F1 Monaco Grand Prix held in Monte Carlo in May 2025? So Lando Norris, right, was the F1 Monaco Grand Prix. He has won the F1 Monaco Grand Prix. He drives for which company? He drives for Lando Norris. He drives for McLaren and he's from UK. Next, World Football Day is annually observed by United Nations every year on 25th of May to acknowledge the global reach of football and its impact across various spheres including commerce, peace and diplomacy. This year it was the second edition of it. Next, identify the company that launched the India's first ever end-to-end autopilot system for navigation in Indian cities in May 2025. It is -0. Next, according to the National Institute for Transforming India, that is Niti Aayog, they have released a report. This is the report. Approximately what percentage does MSME sector contribute to the India's GDP? So this report was released by Niti Aayog. So almost 29% of the GDP is contributed by the MSME sector. Next, Union Minister for Earth Science Dr. Jitendra Singh has launched Bharat Forecast System, the world's first high resolution numerical weather prediction model. What is the special resolution of this BFS model? So resolution is for 6 kilometers. Next, what interest rate did the Ministry of Finance approve for the Employees Provident Fund deposits for FY25? It is 8.25%. Next, the Central Apprenticeship Council under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship proposed a 36% hike in the stipends for the apprenticeships under the NAPS, that is National Apprenticeship Promotion Scheme, and the National Apprenticeship Training Scheme. So what will be the new monthly stipend range for them? The new monthly stipend range will be here 6,800 to 12,300. That was earlier 5,000 to 9,000. Next, UGC, that is your University Grant Commission, approved the establishment of the campuses of 5 international recognized universities in India. Which of the following universities is not among them? If we see here, University of Toronto is not one amongst them. Rest all will be setting up their campus in India. Next is, India participated in the 9th edition of the BRICS Industry Ministers meeting held under the chairmanship of Brazil in Brazil. The key highlight of the meeting was the formal presentation of BRICS Startup Knowledge Hub, right, which is a first of its kind platform that aims to foster cross-border collaboration across startup ecosystem of BRICS member countries. Next, who was appointed as the brand ambassador of Audi India in May as announced by JSW Sports Private Limited, the sports division of the JSW Group. So who was appointed as the brand ambassador of the Audi India? Here, Neeraj Chopra, right, our athlete, the golden boy, and he is a javelin thrower, right, and he has been appointed as the brand ambassador. Next, who won the 2025 Malaysian Masters, officially titled as the Perudo Malaysia Masters, by defeating India's Kidambi Shriknath, that was held in May in Meghalaya. So who won the Malaysia Masters? It was won by Lee Shifeng, and it was the 16th edition of the Malaysian Masters. Next, identify the cricketer who launched the book Tested, The Remarkable Power of Resolve, right, which explores leadership and decision making through various decisions with 11 experts from different fields. So identify that cricketer, Patrick James Cummins, right, he launched this book. This book was published by whom? It was published by HarperCollins Publishers. Next,
In which year IREDA, that is your Indian Renewable Energy Development Agency, was established? So IREDA was established in 1987. Next, mention the theme that was launched by Union Communication Minister Jyotiraditya Madhav Rao Scindia in May for the 9th edition of the India Mobile Congress, which scheduled to be held from 8th to 11th of October in New Delhi. So what is the theme here, students? Theme being innovate to transform, right? The aim here is to basically do focus on more research and development and come up with various use cases for the same. Next, identify the pet food company that achieved a unicorn status recently in 2025 after Nestle acquired a minority stake in it, resulting their valuation exceeding $1 billion. So which is that pet food company? It is Drools Pet Food Private Limited. It became the which unicorn India? It became, tell me, this is your homework, students. It became which number of unicorn India? First, second, third, fourth, or fifth, or sixth? Next, according to the Ministry of Commerce and Industry in May, what was India's provisional FDI inflow in FY25? So according to the Ministry of Commerce and Industry, what was the India's provisional FDI inflow? It was $81.04 billion. Next, identify the person who was conferred with the Asian Athletics Leadership Gold Pin by Asian Athletics Association for the contributions to the development and leadership of athletics across Asian continent. It is Dr. Adli Sumarwala. Next, in May, Dr. Samir V. Kamath, the chairman of DRDO, got extension, that is the second extension, as the secretary of the Department of Defense Research and Development and chairman of DRDO. This was approved by ACC. His tenure was extended from 1st of June 2025 till 31st of May 2026. That means full 1 year extension, and this is the second time he got this extension. Next, students, is our homework section. First question is, when do we observe International Labour Day and the theme of this day? Then second question, Maharashtra and Gujarat Day, when do we observe this and which edition of this day was observed, and when they got the statehood, tell me that also. Then third question, tell me when do we observe World Asthma Day. Fourth question, World Red Cross Day, and fifth question, World Athletics Day. They're all theme, which edition of which was observed, the day, and the reason for all of them, that why do we observe them. So these are your homework questions, students. I need to see maximum participation सभी बच्चों से watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 17 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. आज की वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ा की एग्री ड्रोन इंडिजनाइजेशन फैसिलिटी की, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में इस्टेब्लिश की गई ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए. देन हम बात करेंगे डीजीटी एंड शेल इंडिया, इन्होंने ग्रीन स्किल एंड ईवी ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है. देन एक एमओयू की बात करेंगे, जिससे कल्चरल एंड टूरिज्म बढ़ता हुआ हमें दिखेगा. एंड 22nd एडिशन ऑफ खान क्वेस्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, जो मंगोलिया में हुई. ऑल दीज न्यूज़ एंड मैनी मोर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है. अगर आप नए जुड़े हमारे साथ स्टूडेंट्स, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स. एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स सभी के साथ, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म. ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं. ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट्स ज़रूर बनाना. काफ़ी चीज़ें आपकी रिवाइज होती हुई दिखेंगी एंड काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स.
यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कमलेश पासवान जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया गरुड़ा का एग्री ड्रोन इंडिजनाइजेशन फैसिलिटी को चेन्नई तमिलनाडु में। गरुड़ा एरोस्पेस की ये फैसिलिटी रहेगी, एग्री ड्रोन इंडिजनाइजेशन फैसिलिटी रहेगी, राइट, जहां पर हम देखेंगे कि ड्रोन्स को डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत के अंडर, राइट, एंड ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा इंडिया में, राइट, एंड ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हब रहेगा जहाँ पे जैसे मैंने बताया ड्रोन्स को डिजाइन मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उनको टेस्ट किया जाएगा, करेक्ट। एक और चीज़ यहाँ पे कमलेश पासवान जी के द्वारा 300 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ खोलने की बात की गई एंड TTT प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ये क्या है? ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, ये गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो नई फैसिलिटी रहेगी मार्क करेंगे किस लिए है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन्स के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है DGT एंड शेल इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया ग्रीन स्किल्स एंड EV ट्रेनिंग प्रोग्राम को। देखो इंडिया में आज के टाइम पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूम देना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्शन चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इसके लिए हमारे पास एक तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए पहले, जहाँ पे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग कर सकें। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, राइट, इसके लिए स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं कि अगर मान लो कल को कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़राब हो जाती है तो उसके लिए पहले से हमारे पास टेक्नीशियन हो जो कि इस सेक्टर को समझता हो, उस प्रोडक्ट को समझता हो एंड उसको ठीक कर सके। नॉट जस्ट दिस, उसके अलावा काफ़ी ग्रिड्स पे काम करना पड़ेगा, बैटरीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। बैटरीज के लिए अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए साइंटिस्ट की ज़रूरत होगी, रिसर्चर्स के लिए ज़रूरत होगी। तो ये बहुत बड़ी सेक्टर हो जाता है, राइट, जहाँ पे हम ग्रीन स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो ग्रीन एनर्जी स्किल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा, राइट, एंड यहीं पे हम देखेंगे नेट जीरो टारगेट हमें इंडिया को अचीव करना है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। अगर हम इंडिया में देखें दिल्ली NCR रीजन में, गुरुग्राम, नोएडा, राइट, देन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। इवन कर्नाटका में तो स्टूडेंट्स अभी एक लॉ पास किया गया है या फिर एक रूल आया है कि जो भी रैपिडो ड्राइवर्स हैं, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते थे, राइट, वो जो रेंट पे थे, राइड हेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे जैसे रैपिडो, ओला, उबर, राइट, इनको बंद कर दिया गया है थोड़े टाइम के लिए कि राइट, एंड फर्दर उस पर डिसीजन आगे देखने को मिलेगा, बट ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, ये काम नहीं कर सकते हैं अभी कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देन हम MOU की बात करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन किया गया है मध्य प्रदेश एंड फ्रांस के बीच में, राइट। रीजन बीइंग क्या है इसलिए ताकि कल्चर एंड टूरिज्म के ऊपर काम किया जा सके, राइट, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके दोनों लोकेशंस में। एंड महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में, राइट, जो एंड फ्रांस में, करेक्ट, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हो गए, राइट, स्टूडेंट्स हो गए, अलग अलग प्रोफेशनल्स हो गए, MNC प्रोफेशनल्स हो गए, तो इनका एक्सचेंज प्रोग्राम हो सके ताकि एक दूसरी कंट्री में, एक दूसरी जगह पे जाके एक्सचेंज ऑफ कल्चर हो सके, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। एंड 3 साल के लिए ये साइन किया गया। फिर आ जाते हैं खान क्वेस्ट एक्सरसाइज, ये भी उलान बतर में हुई मंगोलिया में। टेक अ नोट, ये 22nd एडिशन ऑफ एक्सरसाइज है एंड याद रखेंगे 21वां एडिशन लास्ट ईयर अगस्त के महीने 2024 में भी यहीं पे देखने को मिला था। इंडियन आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो 40 पर्सनल्स फ्रॉम कुमोन रेजिमेंट, उनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट रिलीज की गई, कार्बन प्राइसिंग कवर्स अराउंड 28% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, अकाउंटिंग फॉर 2% ऑफ द ग्लोबल GDP। देखो अभी एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें बताया गया कि कार्बन प्राइसिंग, राइट, सबसे पहले कार्बन प्राइसिंग देख लो। ये कार्बन प्राइसिंग होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन प्राइसिंग बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक्सटर्नल कॉस्ट को कवर करता है ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जैसे आपका क्रॉप्स को डैमेज होना पॉल्यूशन की वजह से, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखते हैं, राइट, उस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना, हीट वेव्स, ड्रॉट्स, प्रॉपर्टी लॉसेस, फ्लडिंग की वजह से, सी लेवल राइसिस की वजह से, टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ता है ताकि एनवायरनमेंट के ऊपर काम किया जा सके, उसको सेव रखा जा सके बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन दे आर क्रिएटिंग इनडायरेक्टली, राइट। कार्बन प्राइस रहता है उनका। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की जिसने बताया 28% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस दे अकाउंट फॉर 2% ऑफ द ग्लोबल GDP, राइट। एंड यहाँ पर हमने देखा कि जो ऑपरेशनल कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट, वो बढ़ के 5 से 80 हो गए इन इंडिया, ब्राजील एंड टर्की। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियाज यूनियन कैबिनेट, इसमें सिर्फ 9.7 वीमेन मिनिस्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय UN वीमेन। एंड ITU के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया
10% से भी कम हमें वीमेन यूनियन मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं इंडिया में, राइट। वर्ल्ड में सिर्फ 9 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे 50% का ये मार्क अचीव किया गया है वीमेन कैबिनेट मिनिस्टर्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं एवी लिस्ट। ये वर्ल्ड की पहली यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट है ऑफ बर्ड स्पीशीज, जिसको अभी लॉन्च किया गया। एंड दिस इनिशिएटिव ये रिजल्ट है ऑफ 4 years ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बाय वर्किंग ग्रुप ऑन एविएशन चेकलिस्ट, एवियन चेकलिस्ट कंप्राइजिंग लीडिंग ग्लोबल एक्सपर्ट्स इन बर्ड टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट पे आता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। आरबीआई ने अभी अलाउ किया स्ट्राइप्स को इन द स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। स्ट्राइप्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। स्ट्राइप्स है सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज, राइट। इनको स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी अलाउ कर दिया गया है, राइट। एंड आरबीआई ने क्लैरिफाई किया दैट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये एलिजिबल रहेंगी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, विच इज अपोजिट ऑफ स्ट्रिपिंग, जहां पर कूपन स्ट्रिप्स एंड प्रिंसिपल स्ट्रिप्स रीजनेबल रिजेंबल्ड होते हैं इनटू ओरिजिनल स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑल्सो अगर मैं स्ट्राइप्स की बात करूं, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल या फिर ईच इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ अ बॉन्ड, जो अलाउ करता है टू ट्रेड देम सेपरेटली इन द मार्केट। यहाँ पे हर कंपोनेंट जीरो कूपन बॉन्ड होता है, मीनिंग ये सेल किया जाता है एट अ डिस्काउंट एंड इट पेज नो इंटरेस्ट अंटिल मैच्योरिटी, राइट। ऑल्सो आरबीआई ने यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताई कि सभी फिक्स कूपन बॉन्ड्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद अ रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ 14 years एंड अ मिनिमम आउटस्टैंडिंग ऑफ 1000 करोड़ रुपीज एलिजिबल है स्ट्रिप्स के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई। ये अब आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा, राइट। इंडियाज इन्फ्लेशन ड्रॉप टू अ 6-year लो ऑफ 2.82% मई के महीने में, राइट। अभी सीपीआई डाटा रिलीज किया गया एंड रिटेन इन्फ्लेशन हमें मई के महीने 2.82% देखने को मिली। एंड अगर मैं अप्रैल मंथ की बात करूं तो ये कितनी थी, 3.16% हमें अप्रैल में देखने को मिली थी। फूड इन्फ्लेशन 0.99% प्रोविजनल हमें देखने को मिली मई महीने में। एंड एक और चीज, वो कौन सी स्टेट है जो जिसमें सबसे ज्यादा लीस्ट हमें देखने को मिला इन्फ्लेशन, तेलंगाना, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा केरला में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला, यह है 6.46% का। एंड इन्फ्लेशन अगर मैं तेलंगाना की बात करूँ तो बहुत कम इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 0.55% का। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। गोम्बोजव, राइट, इनको अपॉइंट किया गया एज द 34th प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन स्पेस एंड इसरो, इन तीनों के द्वारा अभी सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च किया गया एक मॉडल रॉकेट लॉन्च, जो कि खुशीनगर में हुआ, यूपी में हुआ। इसके ट्रायल्स यहाँ पे खुशीनगर यूपी में हमें देखने को मिले। ये मॉडल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, पेलोड की मदद से इसको कैरी किया गया, वरना पहले क्या होता था, पेलोड को ड्रोन की मदद से यहाँ पे रखा जाता था, बट अभी पेलोड ही यहाँ पे रख के इसी में इसको लॉन्च किया गया। ये रॉकेट 15 किलोग्राम का है एंड 1.1 किलोमीटर स्पेस तक ये असेंड कर सकता है, राइट। इसको थ्रस्ट टेक इंडिया के द्वारा बनाया गया, लेट मी शो यू। इसको थ्रस्ट टेक इंडिया के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है, राइट। ये आपका थ्रस्ट टेक इंडिया, ये आपकी गाजियाबाद यूपी बेस्ड कंपनी है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर साउथ स्पोर्ट्स के ऊपर। साउथ अफ्रीका ने अभी आईसीसी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है। ये इसका 3rd एडिशन था, आपकी 2023 जून से लेके ये अभी 2025 जून तक ये इवेंट था एंड साउथ अफ्रीका के द्वारा इसको जीत लिया गया। फाइनल कहाँ पर हुआ था, लंदन यूके में हमें इसका फाइनल देखने को मिला था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एडेन मैक्रम, ये मैन ऑफ द मैच रहे फॉर द इवेंट। नेक्स्ट है F1 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो जॉर्ज रसल ने इसको जीत लिया है। ये जर्मनी के लिए, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। आई करेक्ट माई सेल्फ स्टूडेंट्स, ये कैनेडा जॉर्ज रसल, ये आपके कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता। ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। एंड ये ब्रिटिश है, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, करेक्ट, यूके से। सो कमिंग बैक, जॉर्ज रसल मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, ब्रिटिश हैं। मैक्स वर्स्टन सेकंड रेडबुल के लिए, नीदरलैंड से। एंड एंड्रिया किमी, ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, 3rd पोजीशन पे आए इटली से। फिर आ जाते हैं ISSF वर्ल्ड कप म्यूनिच की बात करेंगे, जर्मनी में हो यहाँ। एंड इंडिया ने यहाँ पे 3rd पोजीशन सिक्योर करी विद 4 मेडल्स। फर्स्ट पे चाइना रहा, सेकंड पे नॉर्वे, 3rd पे हमारी कंट्री इंडिया रही। 2 गोल्ड एंड 2 ब्रॉन्ज इंडिया के यहाँ पे मेडल्स हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं ऑबिटरी के ऊपर। एप्पल के पायनियरिंग सॉफ्टवेयर डिजाइनर बिल एक्टिंगसन, इनका रिसेंटली निधन हो गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। जो एप्पल कंप्यूटर्स का GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को ऑब्जर्व किया जाता है।
ब्लड डोनेशन, राइट, एंड जो डोनेट करते हैं ब्लड को उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। 21वीं एनिवर्सरी हमने इसकी ऑब्जर्व करी एंड इसकी थीम रहेगी गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। एंड इटली ने होस्ट किया 2025 का ग्लोबल इवेंट्स थ्रू रोम इटली बेस्ड नेशनल ब्लड सेंटर। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। एल्डर्स के खिलाफ जो अब्यूज हमें देखने को मिलता है, जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, राइट, एंड काफ़ी मिसट्रीटमेंट देखने को मिलता है, तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। एक थीम याद रखेंगे, एड्रेसिंग अब्यूज ऑफ ओल्डर एडल्ट्स इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज थ्रू अ डाटा एंड एक्शन, ये थीम रही। इसके बाद आ जाते हैं ग्लोबल विंड डे, 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। विंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए एंड इससे अब हम एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। तो ग्लोबल विंड डे कब ऑब्जर्व किया गया? 15 जून को ये डे ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब। इसकी एक थीम रहेगी डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन, ये थीम रहेगी यहाँ पे। पहली बार 2007 में इसको ऑब्जर्व किया गया। फिर आ जाते हैं एक और चीज स्टूडेंट्स, कर्नाटका ने टॉप किया विंड पावर एडिशन में। सबसे ज्यादा विंड पावर जो ऐड की गई कर्नाटका में की गई फॉर FY25, जो कि टोटल अब जो कर्नाटका डेवलप कर रहा है वो है 1331 मेगावाट की, एंड ये टॉप पोजीशन पे है इंडिया में, करेक्ट, जो एडिशन हुआ। देन सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे गुजरात। इंडिया का टारगेट है कि हम 100 गीगावाट ऑफ विंड कैपेसिटी को ला सके, टोटल जनरेट कर सके बाय 2030। मूविंग ऑन, एशियन डेंगू डे स्टूडेंट्स 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। एशिया में डेंगू के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। मॉस्किटो बाइट से डेंगू फैलता है, राइट। इसके लिए पहले से प्रिवेंटिव मेजर ले सकें एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट हो सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके इसके ड्रग्स के ऊपर, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी डेडली डिजीज है। इसकी एक थीम रहेगी टुवर्ड्स जीरो डेंगू डेथ्स, साइंस, स्ट्रेटजी एंड सॉलिडेरिटी। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट स्टेट न्यूज़ के ऊपर। अभी आंध्र प्रदेश के द्वारा तालिकी वंदनम, ये एक स्कीम लॉन्च की गई है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। पहली से लेके 12वीं क्लास के बच्चों के लिए इसको लॉन्च किया गया एंड 15,000 रुपये वन टाइम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहाँ पे दिया जाएगा सभी बच्चों के मदर्स के अकाउंट में, जो कि आधार लिंक्ड होगा, राइट। सो टेक अ नोट ऑफ दिस, इनकी परवरिश के लिए, राइट, ये अपने जो भी आपकी पेंसिल, किताब, पेन, राइट, जो भी इनको चाहिए, बुक्स अपने स्टडी के लिए, राइट, वो यहाँ से पूरी हो सके, उनके लिए यहाँ पे ये प्रोवाइड कराया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इनमें यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अनवेल किया एक डिफेंस प्लान फॉर $175 बिलियन गोल्डन डोम के लिए। ये गोल्डन डोम इस सिस्टम क्या है, राइट, जैसे आपका आयरन डोम हो गया। आयरन डोम इजराइल का है। आयरन डोम क्या करता है, अगर उनके सिटी पे अटैक हो रहा है, मिसाइल्स अगर यहाँ पे गिर रही हैं, राइट, ड्रोन्स, यूएवीज, राइट, इनसे अटैक हो रहा है, तो इनको ख़त्म करने के लिए, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए लेज़र से या फिर मिसाइल से टारगेट किया जाता है एंड ये सिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो सिमिलरली एक गोल्डन डोम सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है यूएसए के द्वारा, जो काउंटर करेगा फॉरेन मिसाइल्स अटैक को एंड उनके सिटीज़ को सेफ रखेगा। $175 बिलियन लगा के ये प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा गोल्डन डोम। पूछा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किनको अपॉइंट किया, राइट, जो कि यूएस स्पेस फोर्स के हैं एज द लीड प्रोग्राम मैनेजर इस गोल्डन डोम के लिए। तो वो है जनरल माइकल ग्वेटलिन, प्रोजेक्ट इंचार्ज बने। नेक्स्ट, किस कंट्री ने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला AI पावर्ड मेडिकल क्लिनिक ऑन 24 मई इन पार्टनरशिप विद शंघाई बेस्ड शिनयई AI एंड अल्मोसा हेल्थ ग्रुप, राइट। तो किस कंट्री ने लॉन्च किया पहला AI? ये सऊदी अरेबिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने इन्वोक किया डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन द April 8 जजमेंट रिगार्डिंग द टाइमलाइंस फॉर ग्रांटिंग assent टू स्टेट लेजिस्लेचर बिल्स। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन्वोक किया आर्टिकल 143(1) ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नेक्स्ट, अभी सेकेंड ब्लू टॉक्स हमें देखने को मिली, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी, होस्ट की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इन कोलैबोरेशन विद द एम्बेसीज ऑफ फ्रांस एंड कोस्टा रिका। ठीक है, सेकेंड ब्लू टॉक्स थी ये। क्या हमें पॉलिसीज़ होनी चाहिए, राइट, क्या एक्सपर्ट्स का ओपिनियंस है, क्या उनकी रिसर्च है, राइट, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 14 जो कि है बिलो लाइफ बिलो वाटर, राइट, इसको कंजर्व करने के लिए सस्टेनेबली हम काम कर सकें।
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने ओवरसी किया स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया को, जो कि लॉन्च किया गया था अभी। स्पाइस क्या है, सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, राइट। तो स्पाइसेस इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ये है आपकी स्पाइस स्कीम। इसकी फुल फॉर्म याद करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पाइस स्कीम लॉन्च की गई थी, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको ओवरसी किया जाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। फिर आ जाते हैं, आरबीआई के द्वारा भी एक लेटेस्ट डाटा रिलीज किया गया, आउटवर्ड रेमिटेंस का डाटा है, जो कि इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, राइट, अंडर द लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये घटता हुआ दिखा बाय 6.85% टू व्हाट अमाउंट, तो ये घटकर कितना हो गया 29.56 बिलियन डॉलर, राइट, इन FY25। अगर हम यही देखें FY24 का डाटा, तो ये 31.74 बिलियन डॉलर था हमारा आउटवर्ड रेमिटेंस, मतलब लास्ट ईयर ज़्यादा पैसा बाहर गया था फ्रॉम इंडिया एज कम्पेयर टू इस साल। नेक्स्ट, इनमें आरबीआई ने नोटिफाई किया फॉर्मेशन ऑफ अ 6-member पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड अंडर द पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेशंस टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया, रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग बोर्ड्स फॉर द रेगुलेशंस एंड सुपरविजन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो सिंपली आरबीआई ने नोटिफाई किया कि एक 6 member का पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा, जो कि पेमेंट से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस होती हैं उनके ऊपर काम करेगा। तो पूछा गया कि कौन रहेंगे चेयरपर्सन इस 6 member के बोर्ड के, तो वो है आरबीआई गवर्नर यहाँ पे मेंबर रहेंगे, आपके चेयरमैन रहेंगे। नेक्स्ट, अभी स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन, जो कि पावर करेगा अपकमिंग अग्निबाण लॉन्च व्हीकल। एंड ये फर्स्ट ऑफ इट्स टाइम है कि इंडिया में एक ऐसा इंजन डेवलप किया गया और उसको फिर टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया 5वें एडिशन ऑफ द शिरुई लिली फेस्टिवल। ये शिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में हुआ था। एक फेस्टिवल है, तो यहाँ पे टूरिज्म का काफ़ी ज़्यादा रोल इंक्रीज करने के लिए, फिर टूरिज्म पे काफ़ी ज़्यादा फोकस था यहाँ पर, एंड टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि ये टूरिज्म आएगा तो यहाँ पे एक पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होगी एंड बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, करेक्ट। एंड यहाँ पे शिरुई लिली ये आपका एक काफ़ी रेयर फ्लावर होता है, राइट। इसको आप देखेंगे तो इसको यूज़ करके फर्दर प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे एंड जो प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल किया जाएगा। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सटेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन ऑफ द मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर सर्टेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू 19 मार्च, राइट। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सटेंड कर दिया, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के द्वारा। इसके बाद आ जाते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम बताओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिनको अप्रूव किया गया फॉर द मर्जर विद द इंडियन रेलवेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। वो कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, नॉट बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो कोंकण रेलवेज कॉर्पोरेशन, इनको मर्ज किया जाएगा इंडियन रेलवेज के साथ। बस ये शर्त है कि ये अपना नाम रखेंगे कोंकण रेलवेज। Next, how much amount is approved by the Central Board of Directors of RBI in their 650th meeting held in May to be transformed as a surplus to the Government of India? तो सरकार को सरप्लस दिया गया है अभी RBI के द्वारा, क्या ये एक्स्ट्रा पैसा है हमारे पास, राइट, इसको डेवलपमेंट के लिए यूज़ करो। तो कितना अमाउंट है वो है 2.69 ट्रिलियन रुपीज़। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन स्worn in as the 48th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ एक्वाडोर, करेक्ट। तो मेंशन द नेम, कौन है वो जिनको अपॉइंट किया गया, वो है डैनियल नोबोआ। नेक्स्ट है खेलो इंडिया बीच गेम्स, इनका पहला एडिशन इस बार हमें देखने को मिला था एंड ये पहला नेशनल लेवल ऐसा बीच स्पोर्ट्स इवेंट हमें देखने को मिला, दीव में हुआ, राइट, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पूछा गया है किस स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया मेडल टैली में, तो मणिपुर के द्वारा टॉप किया गया यहाँ पे बीच गेम्स में इन द मेडल टैली। यहाँ पे 14 मेडल जीते गए इनके द्वारा, 5 गोल्ड 6 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज। महाराष्ट्र सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है विद 20 मेडल्स एंड नागालैंड ऑन थर्ड पोजीशन विद 13 medals. Next, who among the following won the F1 Monaco Grand Prix held in Monte Carlo, Monaco? तो किन के द्वारा जीती गई, लैंडो नॉरिस के द्वारा जीती गई। लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, राइट, एंड ये यूके से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड फुटबॉल डे एनुअली कब ऑब्जर्व करते हैं, तो वर्ल्ड फुटबॉल डे ऑब्जर्व किया जाता है 25 मई को। हर साल हम 25 मई को ये ऑब्जर्व करते हैं, राइट। किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, राइट, टू एक्नॉलेज द ग्लोबल रीच ऑफ फुटबॉल एंड इट्स इम्पैक्ट अक्रॉस वेरियस फेयर्स, राइट, एंड इनका ग्लोबली जो इम्पैक्ट है। सेकेंड एडिशन इस बार हमने इसका ऑब्जर्व किया वर्ल्ड फुटबॉल डे का।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला फर्स्ट एवर एंड टू एंड ऑटो पायलट सिस्टम फॉर नेविगेशन इन इंडियन सिटीज इन मे 2025, राइट। तो आइडेंटिफाई द कंपनी का नाम बताओ, वो है -0। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग, इनकी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, आप रिपोर्ट देख सकते हैं। पूछा गया कि जो एमएसएमई सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है टू द इंडियाज जीडीपी। तो 29% यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है टू इंडियाज जीडीपी, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने के चांस रहेंगे। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंस जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा भारत फॉरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया, जो वर्ल्ड का पहला हाई रेजोल्यूशन न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल है। इसका स्पेशल रेजोल्यूशन कितना है, मतलब कितने एरिया तक यहाँ पर ये इजीली वेदर का डाटा को प्रेडिक्ट कर सकता है, राइट, उसको एनालाइज कर सकता है। तो 6 किलोमीटर का यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन है। फिर आ जाते हैं, व्हाट इंटरेस्ट रेट डिड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्होंने अप्रूव किया ईपीएफओ के लिए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के लिए, राइट। तो कितना अमाउंट है वो परसेंट का, वो है 8.25%। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा लॉन्च की गई थी, इन्होंने 36% यहाँ पे हाइक दिया है इन द स्टाइपेंड्स, जो कि एनएपीएस एंड एनएटीएस स्कीम के अंडर बच्चों को आते हैं, राइट। तो वो बढ़कर, जो पहले था आपका 5,000 से 9,000 के बीच में स्टाइपेंड, वो बढ़कर अब 6,800 से आपका 12,300 हो गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर है आपका ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट आते हैं, इनमें यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, इन्होंने अप्रूव किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैंपसेस ऑफ 5 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इज नॉट अमंग दैम। तो इसमें से हम देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो उसमें से नहीं है, बाकी सभी यूनिवर्सिटी अपना कैंपस इंडिया में इस्टेब्लिश करेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया 9वें ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग में, जो कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्राज़ील हुआ। यहाँ पे पूछा गया कि जो की हाईलाइट था ऑफ द मीटिंग वाज द फॉर्मर प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब, जो कि पहला एक इनिशिएटिव रहेगा, ताकि एक जो ब्रिक्स नेशन है, मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बीच में हम कोलैबोरेशन करके अक्रॉस बॉर्डर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया इन मे 2025। तो ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बन गए हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं, गोल्डन बॉय भी के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। तो इनको ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, मार्क करेंगे। एक चीज़ और, डेटॉल इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो डेटॉल इंडिया ने किनको अपॉइंट किया अपना ब्रांड एम्बेसडर, MS धोनी को। नेक्स्ट, किन्होंने अभी 2025 का मलेशिया मास्टर्स जीता, ऑफिशियली टाइटल एज द पेरोदुओ मलेशियन मास्टर्स, जिन्होंने यहाँ पे डिफीटिंग इंडियाज किदाम्बनी श्रीनाथ, जो कि मलेशिया में हुआ था। तो मलेशिया मास्टर्स किसके द्वारा जीता गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ली शीफेंग के द्वारा। ली शीफेंग आपके, राइट, टेकन आउट ऑफ दिस, चाइना से बिलोंग करते हैं, एंड इन्होंने इंडिया के किदाम्बी श्रीनाथ को हराया इन द मलेशियन मास्टर्स। ये 16वां एडिशन था इसका। मलेशियन मास्टर्स किस स्पोर्ट से हम देख रहे हैं, बैडमिंटन। Next students is our homework section. First question is, when do we observe International Labour Day and the theme of this day? Then second question, Maharashtra and Gujarat Day, when do we observe this and which edition of this day was observed, and when they got the statehood, tell me that also. Then third question, tell me when do we observe World Asthma Day. Fourth question, World Red Cross Day, and fifth question, World Athletics Day. They are all theme. Which edition of which was observed, the day, and the reason for all of them, that why do we observe them. So these are your homework questions students. I need to see maximum participation सभी बच्चों से watching this video.